Good morning, everyone. Welcome to the Flora Fauna Talks and the celebration of our 9th Foundation Day of FFSF. We are honored to have Dr. R.C. Chaudhary as our chief guest today. Welcome, sir. I extend a warm welcome to all FFSF members, our esteemed founder director, Professor S.B.S. Khanuja, and our vice president, Dr. A.K. Singh, sir. This gathering marks not only the accomplishments of the past 9 years of our unwavering commitment to the conservation of flora and fauna, and much more. Today's discussion and presentation will reflect our shared dedication to our goals, and we'll see our journey together. Let's embark on this journey. So without further ado, I request our founder chairman to please start the session. Sir. Thank you, Manika. A very good morning and welcome to all on this very important platform of Flora Fauna Science Foundation. First of all, let me welcome Dr. Ramchit Chaudhary, Dr. R.C. Chaudhary on this platform. Welcome, sir. Thank you. I have a double pleasure of having Dr. Chaudhary on the platform because he has the roots in Govind Vallabh Pant University of Agriculture and Technology. करना कब तक And हम वहां से यहाँ आ गए incidentally, he used to be रिंकू director को बोला रिंकू of CRC at Pantnagar at that time when I was a student. So, in addition to that, the journey of Dr. Chaudhary from modern to heritage and then heritage back coming into modern in form of Kalanamak rice, for which he is going to speak today, is very, very important for us. I welcome all entrepreneurs, farmers, students, scientists, and also members of the society who have gathered today to listen to Dr. Chaudhary as well as join us on very important occasion, that is the 9th Foundation Day of Flora Fauna Science Foundation, which was formed on 10th July in 2015. So what we usually do is that second Saturday of July, we have this event, although the roots go into 10th July. Just to introduce Flora Fauna Science Foundation to all those who have joined for the first time, and also to Dr. Chaudhary. Flora Fauna Science Foundation has a vision of enabling villages or villagers to become entrepreneurs, and that's why we call that as e-villages or entrepreneurial villages, which are enabled with capabilities to adopt new crops, new technologies, and then become entrepreneurs with the incomes that usually in agriculture we don't see. And the model or the route on which Flora Fauna Science Foundation works is enabling health and nutrition through agriculture by hardcore science. And therefore, it's a platform of translational science for us. And that is the route that we have been following through the villages that Flora Fauna Science Foundation members, and particularly our lead, Dr. A.K. Singh, keeps visiting and then linking the farmers with the organization. And then this organization, Flora Fauna Science Foundation, links them with institutes, universities, scientists, researchers who bring to them some new opportunities. तो आप सभी का इस मंच पर स्वागत। डॉक्टर चौधरी जो कि काला नमक की रिसर्च के लिए, उसके शोध कार्य के लिए और प्राचीन को कैसे आधुनिक बनाया जाता है उससे जुड़े हैं, उनका भी स्वागत। और आज हम जब हमारे नवे फाउंडेशन डे स्थापना दिवस पर एकत्रित हुए हैं, एक तरफ तो आप सुनेंगे डॉक्टर चौधरी को किस तरीके से ये एक ऐसा हीरा है, ऐसा एक अनाज है जो हीरे का रूप ले चुका है, और उसको वो रूप देने के लिए जो कि प्राचीनता से आधुनिकता की तरफ पर ले जाता है, कि किस तरीके से इस बहुत ही ऊंचे चावल को या धान को बोनाकरण किया गया, और एक तरह से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ वो फिर से करके दिखाया गया, उस पर आज आपको बताएंगे।
और हमारा जो फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन है उसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम हर वर्ष एक थीम पर काम करते हैं, एक विषय चुनते हैं और उस पर आगे चलना शुरू होते हैं। जैसे कि लास्ट या पिछले साल हमारा जो थीम था वो था फसल से सफल, और उससे भी पहले वाला था कृषि से खुशी। इस वर्ष का हमारा थीम है विज्ञान से मुस्कान। तो जैसा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाज को, गांव को और किसान को विज्ञान, विद्वान और उससे इस तरीके की प्रौद्योगिकियों से जुड़ने का काम करते हैं कि जो कि एक सेतु बन जाता है। तो इस पर आगे बढ़ते हुए आज हम हमारा जो नवा स्थापना दिवस है वो भी मनाने जा रहे हैं, जिसमें आप कुछ इस तरीके की गतिविधियां भी देखेंगे कि हमने कैसे प्रगति करी। उसके अलावा आज जो हमारा दूत है, जिसको हम फ्लोरा सारथी कहते हैं, वो एक ऐसी मैगजीन है फ्लोरा बोना साइंस फाउंडेशन की, उसका विमोचन भी किया जाएगा इस 11वें अंक के रूप में। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन के दो इस तरीके के एक टूल कहे जा सके हैं या उपकरण कहे जा सकते हैं, जो न्यूट्री वाटिका और न्यूट्री थाली कहलाते हैं। न्यूट्री वाटिका is a way to bring all nutrition into your garden, whether it is urban or rural, kitchen garden or backyard garden। किस तरीके से वो फसलें जो पोषण दे सकती हैं उनको लगाया जाता है। तो जो काला नमक की बात हम आज करने जा रहे हैं वो केवल एक अनाज ही नहीं है, वो एक न्यूट्रास्यूटिकल का भी रूप ले लेता है जब हम उसके उन गुणों को देखते हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। जैसे कि इसमें आयरन या लोहे की मात्रा, जिंक की मात्रा, और तो और जो एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्तर पर रिसर्च हुई थी गोल्डन राइस की, उसमें बीटा कैरोटीन को लाया गया था। इसमें अपने आप ही बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो विटामिन ए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे जो हम जो जितने भी सदस्य हैं, अधिकांश के लिए एक मेंटर या एक गुरु रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार, प्रोफेसर सुशील कुमार, जो कि मित्र थे किसानों के भी और रिसर्चर्स या वैज्ञानिकों के भी और छात्रों के भी। उनकी याद में फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन ने एक अवार्ड शुरू किया था जिसको हम स्किया कहते हैं, सुशील कुमार इनोवेशन अवार्ड। आज उसका भी शुरुआत की जाएगी, उसकी उद्घोषणा की जाएगी कि लोग उसके लिए 2024 के अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज इस फाउंडेशन डे पर आप ये सभी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो पूरी जो प्रगति हुई है इस वर्ष उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर चौधरी, जिन्होंने एक हेरिटेज का मॉडल जिसमें प्राचीन से आधुनिक कैसे विज्ञान द्वारा किया जा सकता है वो दिखाएंगे। काला नमक प्राइड ऑफ इंडिया है, ये भारत का एक गर्व है जो कि बुद्धा का गिफ्ट भी कहलाता है। और ना केवल गिफ्ट कहलाता है, उसको एक जीआई या ज्योग्राफिक इंडिकेशन जो कहा जाता है, सिद्धार्थनगर में ओडीओपी के रूप में भी आगे लाया गया है। तो फूड, न्यूट्रास्यूटिकल, इकोनॉमिक्स, all these three things are represented in this very important grain. And not only we say that Kala Namak is the only thing, you might also be able to draw the leads that may lead you to many ancient grains that can be developed like this. So without taking more time between you and Dr. Chaudhary, I will like to request Manika to introduce Dr. Chaudhary formally to the audience, and then we will move forward. Thank you. Namaskar. Thank you so much, sir. It's my pleasure introducing sir. Though briefly, Dr. Ramjit Chaudhary, sir, born on 8th November 1944, brought up and educated in and around Gorakhpur, is a son of soil. He holds PhD degree in genetics and plant breeding and then postdoctorate from Germany and Philippines. After working for 45 years with various national and international organizations, and finally retiring from the Food and Agriculture Organization of the United Nations, which is
FAO, as the Chief Technical Officer and Project Manager, now operates an NGO called Participatory Rural Development Foundation in Gorakhpur. Dr. Chaudhary has spent 52 years of his career in teaching plant breeding, rice research, and rural development in more than 40 countries of Asia, Europe, Africa, and Latin America. His career moved into with the following. He was a associate professor at Pantnagar GBPUAT, and which was followed by Pusa Bihar as World Bank as rice specialist, plant breeder with Inga Philippines, of course FAO, which we mentioned, chairman of Participatory Rural Development Foundation. Dr. Chaudhary has worked in more than 40 countries of Asia, Africa, Europe, and Latin America with RRI, FAO, UNDP, and EU, and published 34 books and manuals, including 300 research papers and popular articles. Right. He has developed 150 rice varieties globally, 21 for India alone. His recent work includes first ever released rice varieties of Kalanamak called Kalanamak KN3, Bona Kalanamak 101, 102, and Kalanamak Kiran. His organization also produces PRDF seeds known for its quality. His organization, PRDF, is the Regional Council of NCONF Ghaziabad for Organic Certification, and his team is currently working on organic production and certification of crops under PGS mode. He's also working on biofortification for vitamin A deficiency through golden sweet potato. He also developed the protocol. He's a member of 15 professional societies and has received 59 state, national, and international awards, including the latest Padma Shri awarded by the President of India in 2024 on 22nd April 24. With this very brief introduction, I know there's much more to it. With this very brief introduction, Namaste, sir, and we welcome you to the talk. Thank you. Now, if you can put my presentation. Okay, is it visible, the screen? Yes, sir, it's visible. You can start with the presentation. Okay. So it's already announced by two brilliant introducers to the topic and also to me is the Kalanamak rice, science behind the nutrition to society and opportunity for the farmers. So since a lot of things have already been said about the topic, I think that will save my time and I will skip many of the slides which I had put to explain those points. How can we move? Okay, so my own journey has been only along the rice and it's already introduced, so I will skip this slide. Now we know rice, it has 22 wild species and मेरा ख्याल हिंदी में बोलूं तो बेहतर होगा. हेलो. हाँ जी, आप हिंदी में बोलिए, आप हिंदी में बोलिए. हाँ, मेरा ख्याल स्लाइड तो अंग्रेजी में ही है, तो बेहतर है मैं हिंदी में बोलूं. जी. तो अपने देश में नेशनल जीन बैंक जो है दिल्ली में, उसमें भी 1,05,000 धान की वैरायटीज हैं. फिलीपीन में तो जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल जीन बैंक है, उसमें 1,32,000 से ज़्यादा वैरायटीज हैं. और आधी दुनिया का ये एक तरह से पोषण करने वाला अनाज है धान. और बहुत सारी ऐसे मुल्क हैं जहाँ खाने वाले ज़्यादा हैं, उगाने वाले कम हैं. और इस नाते एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों से. अपना देश भारत ये पिछले 3 सालों से विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है. इसके पहले तो थाईलैंड हुआ करता था, लेकिन हम थाईलैंड को बहुत पीछे छोड़ गए और अब हम दुनिया के सबसे बड़े चावल के निर्यातक हैं. नेक्स्ट ले चलता हूँ आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, द जाइंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. हम फिलीपींस में जब थे, इरी में ये डायरेक्टर जनरल थे, इनके साथ काम करने का मौका मिला. लेकिन बहुत दिनों बाद जब IR8
जो कि दुनिया में राइस को रिवॉल्यूशनाइज किया। भारत सरकार यहाँ 85वीं वर्षगांठ मना रही थी IRR की यहाँ इंडिया में आने का। तो ये था महीना नवंबर, साल था 2016, हमारी इनकी मुलाकात हुई। और फिर ये तो व्हील चेयर में थे, लेकिन जैसे देखा मुझे और मैंने कंबोडिया का नाम लिया, अपने अनुभव इनसे साझा किए, ये खड़े हो गए व्हील चेयर से। मैंने कहा सर आप कहा करते थे पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर, कि जहाँ धान है वहाँ दरिद्रता है, या यूँ कि जहाँ दरिद्रता है वहाँ धान जरूर है। तो हम तो ऐसे देश और ऐसे प्रदेश के हैं जहाँ धान नहीं होता है, खरीफ में दूसरी फसल नहीं हो सकती। तो क्या किया जा सकता है इस लिंकेज को तोड़ने के लिए? इनका सीधा जवाब था कि स्पेशलिटी राइस ही एक विकल्प है जो दरिद्रता से धान के किसानों को दूर कर सकता है। वो मुझे एक गुरु मंत्र जैसा लगा, और हमने काला नमक धान, जो यहाँ का बड़ा मशहूर धान है, उसके ऊपर हमने अनुसंधान शुरू किया। और शुरू किया जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से आज़ाद होकर लौटे। हम रिटायर नहीं बोलते, हम आज़ाद बोलते हैं। हम आज़ाद होकर लौटे। अगला लेंगे। लेकिन एफएओ में रहते रहते हमने एक पुस्तक लिखी थी, स्पेशलिटी राइसेज ऑफ द वर्ल्ड, ब्रीडिंग, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, जिसको कि यूएन ने ही छापा हुआ था। इससे भी काला नमक का जिक्र था। अगला। मैं विद्वत जनों को बता दूं कि जो धान या किसी भी फसल में जो विविधता का कारण है वो म्यूटेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेग्रीगेशन, उससे जीन पूल बनता है और उससे लैंड रेस बनती है। तो धान काला नमक भी एक तरह से लैंड रेस थी। तो हमने इसको इकट्ठा करना शुरू किया किसानों से, एक एक मुट्ठा। अगला। अब जो मेरे अपने बारे में बताया जा चुका है कि हमने भारत अपने देश के लिए 24 वैरायटी विकसित की थी जब हम पंतनगर में थे या पटना में थे। 12 तो हमने कंबोडिया को दिया था जब वहाँ थे डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ, और 94 वैरायटी दूसरे देशों को दी। इस तरह से 150 धान की वैरायटी मेरे द्वारा विकसित की गई हैं विश्व के लिए। लेकिन काला नमक उसमें अनोखा है, और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध से इसका रिश्ता है। भगवान बुद्ध ने प्रसाद के रूप में सिद्धार्थ नगर के किसानों को दिया था इसकी खेती करने के लिए। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ इनको बोध गया में, वहां से अपने पिता की राजधानी कपिलवस्तु चल रहे थे। रास्ते में एक बजहा जंगल पड़ता है सिद्धार्थनगर जिले में। वहाँ के किसानों ने इनको रोका, प्रणाम किया और बोले भगवान कुछ प्रसाद दीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। इन्होंने अपनी झोली से एक मुट्ठा धान निकाला और वो धान को कहा कि आप इसको निचली जमीन में खेती करिए, इसमें जो सुगंध है वो हमारी याद दिलाएगी, और इसमें जो पोषक तत्व हैं, जो आज के वार्ता का मेन थीम है, इसमें जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व जो है हमारा आशीर्वाद है। दाहिने हाथ जो आप देख रहे हैं तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु के पश्चात का दृश्य है जो गोरखपुर के बगल में ही है। अगला। ये कपिल वस्तु का दृश्य है, और दाहिने हाथ जो आप देख रहे हैं ये मेरे द्वारा एकत्र किया हुआ वहाँ एक टीले से ये पुराना चावल है, और इसका आकार प्रकार भी वो काला नमक से बहुत कुछ मिलता जुलता है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के पिता की जो जो रसोई है उसमें भी काला नमक ही पकता था। अगला चलें। ये काला नमक है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। काला नमक इसलिए कहा जाता है कि इसका भूसी का रंग जो है काला है। नमकीन जमीन में भी पैदा हो सकता है, इसलिए हमारे पुरखों ने इसका नाम काला नमक दिया था। इसका अगर भूसी हटाया जाए तो बाएं हाथ जो आप देख रहे हो ये हल्का हरा होता है, और बाद में इसकी चर्चा मैं करूंगा हरा क्यों होता है। और अगर ये हरापन भी इसका हटा दिया जाए, जिसको कहते हैं पॉलिश कर दिया जाए, तो चावल इसका सफेद होता है। अब हमने जो अपना काम शुरू किया, जैसा आपको बताया कि 250 एक्सेप्शन हमने किसानों से इकट्ठे किए, और उनमें जो सबसे अच्छा था उसको हमने प्योरीफाई किया प्योर लाइन सिलेक्शन से, और वो उसमें से जो
बेस्ट था उसको हमने KN3 या काला नमक 3 का नाम दिया। सरकार से टेस्टिंग करवा के लोगों ने कहा हाँ साहब इसका जो सुगंध और स्वाद ये तो आ गया, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुगंध है इसमें, लेकिन दिक्कत है। और दिक्कत वो बताई कि लंबा होता है, 2 मीटर 2.5 मीटर लंबा होता है, गिर जाता है, पैदावार इसकी कम है। फिर हमने तरह तरह से इसको छोटा करने का प्रयास किया, म्यूटेशन ब्रीडिंग लगाई, लेकिन कोई सफलता हमको नहीं मिली। फिर हमने इसका संकरण किया पौनी प्रजातियों से, उससे हमको पहली प्रजाति मिली बौना काला नमक 101। बौना तो हो गया क्योंकि 2.5 मीटर से इसकी ऊंचाई 1 मीटर से कम हो गई। लोगों ने कहा हाँ साहब बौना हो गया, पैदावार इसकी बहुत बढ़ गई, लेकिन इसकी भूसी का रंग काला नहीं हो, भूरा है और इसमें गुणवत्ता नहीं है। फिर हमने इसको सुधार के बौना काला नमक 102 बनाया। और अभी जो सबसे नवीनतम प्रजाति है वो है काला नमक किरण। तो इसमें जो स्वाद और सुगंध है वो पुराना काला नमक या ये KN3 के बराबर है, उपज उसकी दुगनी है। और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि जो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए। किसानों का आमदनी दुगनी नहीं होती काला नमक से, तिगुनी होती है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी की बातों में बड़ी सच्चाई थी कि जो स्पेशलिटी राइस है इसको लगाने से किसान दरिद्र नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसकी आमदनी तिगुनी हो जाएगी। अब पब्लिक सपोर्ट हमको मिलता रहा। पहली मीटिंग हमने सिद्धार्थनगर में कराई थी, रिज्यूमिनेशन मीटिंग, और किसानों से वादा लिया गया कि वो हमारा साथ देंगे काला नमक को बचाने में, क्योंकि इसका इलाका जो भगवान बुद्ध के टाइम में भी 50,000 हेक्टेयर होता था वो घट के 2,000 हो गया था। ऐसा लगता था कि अब काला नमक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। और हमारी जो इनको काला नमक को बचाने और सुधारने की यात्रा है वो वहीं से शुरू हुई। तो अब जो 2,000 हेक्टेयर था वो बढ़ते 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 पिछले साल करीब करीब 80,000 हेक्टेयर में इसकी खेती बढ़ गई, 40 गुना। तो 40 गुना ऐसे नहीं बढ़ा, एक तो हमारी नई प्रजातियां आई जिससे काला नमक बौना काला नमक 101 2016 में, बौना काला नमक 102 2017 में, और जो काला नमक किरण है 2019 में। तो इन तीनों ने काफी उपज बढ़ाई, किसानों की जो है आमदनी तिगुनी हुई। और ये 4 प्रजातियां आई हमारी किसानों के साथ, ये 80,000 हेक्टेयर पर इसका क्षेत्रफल पहुंचाया। ये तो बहुत बारीक बातें हैं जिसको हम नहीं बताना चाहेंगे, लेकिन ये मुख्य है कि KN3 जो लंबी वाली प्रजाति थी जिसमें स्वाद और सुगंध पुराने दिनों की याद दिलाती थी, खाने वालों को भी उगाने वालों को भी, वो उसका उपज जो है वो दोगुना किया गया, लंबाई छोटी कर दी गई, 2.5 मीटर से लेके 1 मीटर से कम की हो गई, और इस नाते इसका बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे इसके गुणों को हम लोग तलाशने लग गए कि ये इसमें क्या गुण हैं। जैसे अगर कोई हीरे का टुकड़ा, हम अफ्रीका के भी 10 देशों में काम किए हैं, वहाँ भी अपने वहाँ देश में जो हीरा आता है तलाशने के लिए, अगर वो आम आदमी को मिले तो कहेगा कांच का टुकड़ा फेंक देगा, लेकिन तलाशने के बाद ही वो हीरा बनता है। तो इसी तरह से काला नमक को हमने तलाशना शुरू किया। आगे चलें। अब ये तराशने के बाद जो काला नमक है वो तरह तरह से तराशा गया। पहले तो इसकी प्रजातियां जिसके बारे में हमने चर्चा की कि प्रजातियां इसकी 4 विकसित की गई, उसके बाद इसके गुणों के ऊपर तलाश हुआ, और उसके बाद आजकल बड़ा जैविक खेती का बड़ा जोर है कि जो रासायनिक खादों का और दूसरे जो इनके कीड़े और बीमारियां मारने वाले जहर हैं, इनका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है वातावरण के ऊपर भी और हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी। क्योंकि 2% तो में कीड़ा और बीमारी खत्म हो गई, लेकिन बाकी 98% या तो मिट्टी खराब करता है, पानी खराब करता है, हवा खराब करता है, हमारी और पशुओं जानवरों की तंदुरुस्ती भी खराब करता है। इसीलिए सरकार का बड़ा जोर है कि ऑर्गेनिक पैदा किया जाए। हमने ऑर्गेनिक पैदा करने की विधि जो है वो निकाली, प्रोटोकॉल इसका बनाया, क्योंकि शोर स्वयं मच रहा था, जहां आपने ऑर्गेनिक खेती शुरू की आपकी पैदावार एकदम से गिरेगी।
तो ये जो कंपनियां हैं जो ये तमाम जहर बनाती हैं, वो डराती थी किसानों को। हमने बड़े पैमाने पर एक एक एकड़ में तमाम जिलों में, गोरखपुर के अलावा और भी जिलों में, आसपास के जिलों में किसानों के खेतों पर परीक्षण करवाया, प्रदर्शन करवाया और ये कहा कि ये जो झूठ से आप बचिए, बहुत लोग झूठ बोल रहे हैं हर सौ से कंपनियों वाले, तो आपकी पैदावार कम नहीं होगी, ज़्यादा होगी। तो हमने जो फार्मूला एक निकाला कि ट्राइकोडर्मा से बीज शोधन करिए, सुडोमोनास से धान की जड़ें रोपाई से पहले डुबो के उसको लगाइए, आपकी पैदावार बढ़ेगी। चाहे उसमें गोबर की खाद डालिए, चाहे हरी खाद डालिए, मुर्गी का खाद डालिए, आपकी पैदावार बढ़े। तो उनके दिल से ये डर निकला कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे या जैविक खेती करेंगे तो हमारी पैदावार कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। इसी तरह से अब इसीलिए अब हजारों एकड़ में जैविक काला नमक की खेती हो रही है और प्रमाणीकरण भी इसका किया जा रहा है। अब यूँ समझिए कि ये देख लीजिए कि ये जो तमाम जिलों में दिखाया गया कि किस तरह से पैदावार आपकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाहे वो उसमें हरी खाद डालिए, गोबर की खाद डालिए, मुर्गी खाद डालिए, लेकिन ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास लगाइए इसकी जड़ों में, तो आपको की पैदावार बढ़ेगी। अब बात आती है प्रमाण देने की कि क्या ये जैविक है। तो हमारे श्रोताओं को ये पता होगा कि भारत सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है गाजियाबाद में, नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। हमारी संस्था उसकी रीजनल काउंसिल है एंड बाय दैट वर्च्यू हम लोग प्रमाण पत्र इशू करते हैं। तो काला नमक का भी प्रमाण हम लोगों ने प्रमाण पत्र टेस्ट कराने के बाद किसानों को जो है प्रशिक्षण देने के बाद हमने उसको शुरू कराया। अब सवाल ये है कि इसकी जो जो किसानों की जो हम अभी फायदे की बात कर रहे थे, तो कॉमन राइस जो है अगर प्रति हेक्टेयर 35,500 का जो फायदा उठाता है, शुद्ध लाभ होता है, तो ऑर्गेनिक काला नमक लगाने से 1,10,000 सीधे सीधे 3 गुना इसकी फायदा होती है। और ये खाली एक प्रयोग के ऊपर ये आंकड़े नहीं आए हैं, इसमें दसियों, क्या आपको कहें कि हम सैकड़ों उसके परीक्षणों प्रदर्शनों का परिणाम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, और पैसा इसमें था 158 बिलियन रुपीज का था, जिसमें कि तमाम क्लस्टर बनाए गए और करीब करीब 1.5 मिलियन किसान इसमें जुड़े गए थे। हमारी संस्था नाबार्ड से भी फंडिंग ली, सरकार से भी फंडिंग ली, और हजारों नहीं, अब तो खैर लाखों किसान हो गए हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो उससे खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती का एक नया प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है कुशीनगर जिले में। थोड़ा सा फर्क है जैविक और प्राकृतिक में, तो हम ये भी करना चाह रहे थे, वो भी हमने नाबार्ड की फंडिंग से शुरू किया है और 3 साल में इसके अभूतपूर्व परिणाम मिले हैं। और सबसे पहले किसान का जो बिकता है वो प्राकृतिक खेती में पैदा किया हुआ जो धान या चावल बिकता है। अब कुशीनगर जिले के परिणाम हैं कि यहाँ का तो खैर जो नेट प्रॉफिट है या शुद्ध लाभ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और जैसा कि हमारे इंट्रोडक्शन में ही बताया गया था कि काला नमक का जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो चुका है, ये हम ही ने कराया था और 2010 में। और ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन के माने होता है कि किस क्षेत्र में खेती करने पर काला नमक की गुणवत्ता बनी रहेगी। गुणवत्ता में मूल चीज दो है, एक तो इसकी सुगंध है कि सुगंध अच्छी रहेगी, और दूसरा इसका जो स्वाद है खाने का, इसके बाद में जो हल्की मिठास होती है और जो मुलायमियत होती है वो बनी रहेगी। तो ये हमने पाया कि जो यहाँ का एग्रो क्लाइमेटिक जोन नंबर 7 है उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि गोरखपुर जिले के गोरखपुर मंडल के 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। बस्ती मंडल के 3 जिले आते हैं, संत कबीर नगर, बस्ती और सिद्धार्थनगर। और देवी पाटन मंडल के
4 जिले आते हैं, इसमें कि गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच आते हैं। तो इन जिलों में जो नेपाल की तराई से सटे हुए हैं, करने से काला नमक की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। तो इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन 10 साल के लिए मिला था, 2020 में समाप्त हुआ। हमने इसको 10 साल के लिए और बढ़वा दिया है। अब 2030 तक जियोग्राफिकल इंडिकेशन है कि इन 11 जिलों का पैदा किया हुआ काला नमक बहुत अच्छा होगा। अब दूसरा लीगल सपोर्ट, आपने सुना होगा कि बासमती का पेटेंटिंग अमेरिका ने करवा लिया था। हम उससे वाकिफ थे, क्योंकि उस समय भी जब हमने काम शुरू किया था तो इंटरनेशनल कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा था। तो मैंने कहा भाई, हम गरीब, हमारे किसान गरीब, तो हम तो मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं लड़ सकते। इसलिए हमने पहले ही इसका प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट के तहत इसको किसानों के नाम से हमने इसको प्रोटेक्ट करवा दिया है, और 2025 तक है। आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़वाया जा सकता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की चर्चा हमने कर दी है कि 2030 तक वैलिड है। और अब हमारा प्रस्ताव अभी तो पेंडिंग है सरकार के पास कि एक काला नमक प्रमोशन बोर्ड बनाया जाए, उसी तरह पर जिस तरह से बासमती का प्रमोशन बोर्ड है, एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड बासमती का। तो एक दफा ये बन जाएगा तो संभवतः बासमती की तरह ये आगे बढ़ेगा या उससे भी आगे बढ़ सकता है। इस तरह से लीगल सपोर्ट है। जहाँ कहीं मौका मिलता है काला नमक के बारे में हम लोग ये प्रचार प्रसार करते हैं। ये मेरा ही लेक्चर है, जो कि सिद्धार्थनगर जिले में हर साल एक बार काला नमक महोत्सव लगता है। उसमें हमारी स्टॉल भी लगता है, और उसमें हजारों किसान आके देखते हैं, हमारे लेक्चर भी सुनते हैं। अगला, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से आशीर्वाद लेके हमने पहला जो है खेप ये सिंगापुर भिजवाया था। और इसके पहले मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा बड़ा गहरा विश्वास है, जब तक किसान का माल बिकेगा नहीं, उसको फायदा नहीं होगा, वो किसी चीज़ की खेती क्यों करेगा। तो हमने कहा स्थानीय रूप से जो बिक रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हम बाहर भेजवाएं। अभी तक हम लोग 550 क्विंटल सिंगापुर भेज चुके हैं, पड़ोसी देश नेपाल को 100 क्विंटल भेज चुके हैं, दुबई भेज चुके हैं, जर्मनी भेज चुके हैं, और कई देशों को गया है। और पहली दफ़ा हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पहली दफ़ा अभी तक हम लोग 10 क्विंटल अमेरिका भी भेज चुके हैं। आगे भी अभी जा रहा है, अभी पैकिंग हमारी चल रही है, और 10 क्विंटल अमेरिका भेज रहे हैं, और आगे इंग्लैंड वगैरह भी भेजने का इरादा है। इस तरह से किसान जो है अब बाजार से भी जुड़ा हुआ है कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, अच्छा अच्छा पैसा उसको मिलेगा, उसका माल बिकता रहेगा। स्थानीय रूप में काफ़ी खपत इसकी हो रही है। क्यों हो रही है, इंट्रोडक्शन में तो हमारे साथियों ने कुछ बता दिया है, लेकिन हम आगे भी बताएंगे इसके बारे में। तो अब ये एक्सपोर्ट जो है हमारा, ये जो सिंगापुर और दूसरे जगहों पर ये चल रहा है, किसान का फायदा हो रहा है। अभी तो 55 टन गया, 10 टन नेपाल गया, जर्मनी गया, और अभी अमेरिका और दूसरे देशों को भी भेजा जा रहा है। पार्लियामेंट में एक सवाल किसी ने पूछा था, हमारे नेता ने, कि जो काला नमक पैदा हो रहा है उसका कितना प्रतिशत एक्सपोर्ट हो रहा है। माननीय मंत्री ने जवाब इसका दिया था कि पिछले साल अभी तक जो है 7% जो टोटल प्रोडक्शन का है, बाकी जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, और बाकी तो अभी और आगे बढ़ेगा, इस साल तो और आगे बढ़ेगा। खुशी की बात है कि सरकार ने कुशीनगर में, जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलाया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 बुद्धिस्ट देशों के राजदूत आए थे। पहली फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट श्रीलंका से आई थी। इसमें हमने 100 पैकेट आधा आधा किलो के माननीय मोदी जी से दिलवाया था। वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग आए थे, 100 पैकेट, जो आप पे लाल पैकेट इसमें देख रहे हैं, इसी किस्म का पैकेट माननीय योगी जी ने भी श्रीलंकन जो आए थे उनको दिया था। हमने स्वयं 10 राजदूतों को ये पैकेट, भगवान बुद्ध का प्रसाद, क्योंकि सब बुद्धिस्ट देशों के थे, तो हमारी खुद की सोच है कि एयरपोर्ट कुशीनगर
ये बुद्धिस्ट सर्किट में है और तमाम जो है हमारे यात्री लोग आएंगे बुद्धिस्ट देशों से, वो अपने साथ यहाँ ले जाएंगे। तो कुशीनगर एयरपोर्ट पर भी एक दुकान हमने खुलवा दी है। ये देखिए हमारे सिंगापुर के बायर हैं और जो इसी पैकिंग में हमने इनको भिजवाया, पीछे पैकिंग पड़ी हुई है। तो यहाँ से अपने देश से जाता है और ये वहाँ पे बेचते हैं। तो सिंगापुर का बाजार तो बड़ा छोटा है, लेकिन वहाँ पे जुड़ा हुआ है बुद्धिस्ट देश, जापान, कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, ये सारे बुद्धिस्ट देश इससे जुड़े हुए हैं। तो सिंगापुर से फर्दर एक्सपोर्ट इन देशों को हो रहा है। तो अब ये देखिए जो 10 टन या 100 क्विंटल हमने खुद अपने प्लांट से गोरखपुर से काठमांडू बाय ट्रक ही भिजवाया था। तो बाजार किसानों को दिया जा रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो एरिया आप देख रहे हो 2023 में 80,000 हेक्टेयर, जो कि नई वैरायटी, नई टेक्नोलॉजी और नया बाजार दिया गया। और यहाँ हम ये भी करना चाहेंगे कि सरकार बड़ी मेहरबान है, खास तौर से जो MSME है, इसने जो करीब करीब 8.5 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में हमें दिए और एक हमने कॉमन फैसिलिटी सेंटर काला नमक के लिए सिद्धार्थनगर जेल में खुलवा दिया है। यहाँ पे किसान अपना काला नमक उगाएंगे, ले आएंगे, उनको तुरंत पेमेंट हो जाएगा। वहाँ पे बड़ी टॉप क्लास मशीनें लगी हुई हैं, वो चावल बनाएंगी और वहीं से एक्सपोर्ट भी होगा। तो इस तरह से चारों तरफ हमको सहायता मिल रही है। अब हम आते हैं जो आज के विषय मेन थीम है कि आखिर काला नमक क्यों, क्या क्या बात है काला नमक में। तो काला नमक क्यों, तो ये काला नमक हम बासमती से तुलना करते हैं तो जो फैट है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वो बासमती के बराबर है। लेकिन प्रोटीन अगर आप देखिए तो बासमती में करीब 6% प्रोटीन है और काला नमक में 11%, लगभग दूना प्रोटीन है। और लोहा या आयरन जो हमारे शरीर में रहने पर खून बनाता है, और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा कि अगर कोई कमजोर व्यक्ति है जिसको खून की कमी है तो डॉक्टर उसको लोहे की गोली देता खाने के लिए। तो जो काला नमक का खाने वाला है उसको लोहे की गोली नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बासमती का 3 गुना प्रोटीन है। जिंक या जस्ता जो हमसे बीमारियों के से लड़ने की ताकत देता है, वो इसमें 4 गुना है। बासमती का 4 गुना इसमें ज़्यादा जस्ता है या जिंक है। आपको याद होगा कि जब कोरोना खूब यहाँ चल रहा था पिछले साल, तो टीवी पर प्रचार किया जाता था कि जस्ते की गोलियां हैं, जिंक की गोली खाइए और आपको बचाएगा ये कोरोना से। हम ये कहते हैं कि अगर कोई काला नमक दोनों टाइम खा रहा है तो उसको कोरोना नहीं होगा। तमाम मीडिया वालों ने, अखबार वालों ने भी इस चीज़ को अच्छा खासा उछाला था कि काला नमक खाने वाले को ये नहीं होगा। और उससे भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है कि सोचिए कि डायबिटिक लोग कितने हैं, मधुमेह के रोगी या शुगर के मरीज कितने अपने देश में हैं। शायद ही कोई परिवार बचा हो जिसमें कि मधुमेह का रोगी न हो। तो डॉक्टर पहली सलाह देता है उनको कि आप केला मत खाइए, आप आलू मत खाइए, आप चावल मत खाइए। तो ठीक है, केला तो छोड़ सकता है, आलू भी थोड़ा मोड़ा छोड़ सकता है, लेकिन चावल जो पूरब का आदमी अगर नहीं खाएगा तो क्या खाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो जो डायबिटिक लोग हैं उनके पास भात की होती है। डॉक्टर इसलिए मना करता है कि जो सामान्य चावल या बासमती का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 80 से 85% के बीच में है। काला नमक का 49 और 52 के बीच में है। कहने का मतलब है कि अगर बिना पॉलिश किया हुआ है तो उसका 49% है, पॉलिश किया हुआ है तो 52% उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से कम है तो डॉक्टरी भाषा में उसको शुगर फ्री कहा जाता है। तो दूसरे शब्दों में आपका काला नमक शुगर फ्री है। काला नमक शुगर फ्री है। ये शुगर की दवाई नहीं है, लेकिन आपका के खून में शुगर की मात्रा बढ़ने नहीं देगा। तो डायबिटिक लोग भरपेट ये काला नमक खाएं। मीडिया ने भी इस चीज को काफी उछाला है। और एक और चीज आपको बता दें कि चावल में विटामिन ए नहीं होता। ऐसे बासमती में 0 है, 0 है, लेकिन काला नमक में विटामिन ए होता है।
बीटा कैरोटीन के रूप में। शुरू में हमने आपको जब दिखाया था काला नमक का धान, काला नमक का चावल, तो उसमें ये भी दिखाया था कि काला नमक की भूसी उतारिए तो उसके नीचे हरा रंग होता है, ग्रीन। वो हरा रंग जो पिगमेंट है वो बीटा कैरोटीन है। इसकी हमने एनालिसिस लखनऊ के लेबोरेटरीज में कराया और ये पक्का किया कि इसमें जो है ये बीटा कैरोटीन है। अनोखा धान है दुनिया का, विश्व का अनोखा धान है दुनिया का, जिसमें बीटा कैरोटीन भी होता है। अभी जो वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं पिछले 30 सालों से, और ज्यादा हो गया बल्कि 40 सालों से वैज्ञानिक लोग लगे हैं बीटा कैरोटीन के पास जो है वो बनाने के लिए। लेकिन गोल्डन राइस जो आ रहा है उसमें भी 0.42 जो है बीटा कैरोटीन है, जबकि इसमें ज्यादा है। तो भगवान का, और सरकार अभी मना कर रही है गोल्डन राइस खाने के लिए, इसीलिए कोई वैरायटी अपने देश में रिलीज नहीं है जिसमें कि गोल्डन राइस वाली हो गुण। अब जो है हम लोग इसमें इसमें विटामिन ए है। अब इन गुणों के आधार पर हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है काला नमक। तो ये देखिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ धान काला नमक किरण, और ये हमारे जितने भी प्रदर्शनी होती है उसमें हम लगाते हैं और ये कहते हैं कि आप इसको बोलिए कि आप दो पुस्तकें मेरी आई हैं। एक अंग्रेजी की है, स्टोरी ऑफ काला नमक राइस, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसमें 3000 वर्षों का इतिहास है और भगवान बुद्ध के प्रसार के रूप में इसको परिलक्षित किया गया है। अभी एक 300 पृष्ठों की आई है हिंदी की पुस्तक, क्योंकि यहाँ अधिकांश किसान और उपभोक्ता हिंदी चाहेंगे। तो काला नमक धान अतीत से वर्तमान, तो ये एक्सपेंडेड वर्जन है इंग्लिश वाले का, और ये अभी 2024 में 26 जनवरी को लॉन्च हुई है ये पुस्तक। और ये दोनों पुस्तकें amazon.com पर ये उपलब्ध हैं, हमारे से भी लोग इसको मंगा सकते हैं। तो अब एक सम्मान जैसा बताया गया कि दूसरे सम्मान को ले आता है। अब यहाँ पे भी देखिए नाबार्ड के जो चीफ जनरल मैनेजर हैं लखनऊ में, उन्होंने हमको हमारा जो प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम है उसके लिए इन्होंने सम्मानित किया था। बिहार के गवर्नर ने, क्योंकि बिहार में भी हम 5 साल रहे हैं, अभी मुझे बुला के वहाँ पे सम्मानित किया था। ये तो जो हमें पद्मश्री का मेडल ये 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के हाथों में मिला। ये पद्मश्री मेडल का पीछे और आगे वाला दोनों का हिस्सा है। ये सर्टिफिकेट हमको मिला है भारत के राष्ट्रपति के हाथों। और मेरा ख्याल आखिरी स्लाइड होगी, ये राष्ट्रपति महोदया के हाथों ये हमको पद्मश्री का सम्मान का मेडल और प्रमाण पत्र दोनों 22 अप्रैल 2024 को दिया गया। तो ये सब हम तो कहेंगे कि हमारा जो रिटायरमेंट के बाद या आज़ाद होने के बाद का जो काम है काला नमक के ऊपर, उसके कारण ये मान सम्मान मिला और एक पहचान हुई, एक हीरा जो बिना तराशा हुआ मिट्टी में पड़ा था, जो समाप्त हो रहा था, उसको हमने इतनी पहचान दिलाई। और यही नहीं, इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल की से कैटेगरी में लाके खड़ा किया। तो उगाने वाले को फायदा, खाने वाले को फायदा। और मेरा ख्याल है हम यही धन्यवाद देते हैं अपने श्रोताओं को। थैंक यू। यस सर। Thank you so much, sir. That was a very nice presentation. Thank you so much. I'd request, let me put it up. I request Professor Kanuja to please present citation from the foundation. Sir, let me put it up, sir. Yeah. So if you want, sir, I request you to say a few words before we honor sir with. Okay. थैंक यू डॉक्टर चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच पर आए और हमारे देखने वाले और सुनने वालों को आपने काला नमक की हर दृष्टिकोण से अवगत करवाया। आज जो आपने व्याख्यान दिया उससे सभी को समझ आ रहा होगा कि ये केवल एक प्राचीन
अन्न ही नहीं है। इसको जब वैज्ञानिक ढंग से आपने तराशा है और उसके पश्चात जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ था, बोनाकरण फसलों का, ताकि वो लॉजिंग ना हो, वो गिरे नहीं जब वातावरण में हवा तेज चले या पानी भर जाए, उस तरफ से भी देखते हुए और उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाते हुए डबलिंग द इनकम की बजाय ट्रिपलिंग द इनकम का आपने एक मॉडल बताया। मैं कहूँगा कि फूड टू इकोनॉमिक्स, this is the path. Those who are seeing, they can see that how a breeder, how a geneticist can really look deep into the genes of a plant or crop species. Particularly, I'm saying for the students, they must see it that what Dr. Chaudhary has shown us as an example of a heritage grain or an ancient grain being or becoming a modern grain for health and nutrition. It can be done for many, many other ancient grains also. And particularly the lead, if we take from what we eat during the Vrat, you could be doing wonders. And this board, which he is talking about for Kalanamak, can have further enrichment with all those ancient grains. तो इस तरह से जब हम आगे सोच रखते हैं कि कैसे प्राचीन से आधुनिक विज्ञान द्वारा किया जा सकता है, ये एक जीता जाता उदाहरण है काला नमक चावल, जो समाज के लिए हर तरीके से लाभकारी हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी, आपने इस चीज़ को हम सब तक और हमारे जो लाभार्थी हैं उन तक पहुंचाया। आपकी फाउंडेशन बहुत बेहतरीन काम कर रही है, जिसके लिए हम फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन की ओर से भी आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में फ्लोरा फोना साइंस फाउंडेशन और आपकी फाउंडेशन मिलकर कुछ एक ऐसी सिनर्जी ला पाएगी कि उस सहभागिता में हम आपके द्वारा विकसित चीज़ें और जो हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लेके आते हैं उनको समाज तक और ई विलेजेस यानी कि एनेबल्ड एंटरप्रेन्योरल विलेजेस बनाने में लाभकारी होगी। बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम आपको आई विल से दैट वी आर ऑनर्ड टू पे यू ए टोकन रिस्पेक्ट इन form of this citation, and we look forward to your guidance in future too. As I told you that when you were director of CRC at Pantnagar, I was a student, working for breeding of wheat, following the Green Revolution implications under Dr. P.L. Gautam at that time. So I Oh feel my yes. So I feel doubly बड़ी privileged खुशी to हुई, have बड़ी you. खुशी हुई जान के। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आप आज आए और हम आगे भी आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे। ये सर्टिफिकेट की एक हार्ड कॉपी भेज दीजिएगा, सम जी जी, सिग्नेचर। इसका आपको कुरियर से ओरिजिनल भेज दिया जाएगा। जी जी, इसको हम आपके यहाँ आज ही या कल तक भेज देंगे सर। हाँ, इसको डॉक्टर साहब माउंटिंग करवा के भिजवा दें। माउंटिंग करवा के भेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। डॉक्टर मनिका, आगे के कार्यक्रम। Yes, we move forward. We have a short briefing for Flora Sarthi and its inauguration. I request Dr. V. Sundareshan to please take the dais. So good morning to all. कि पहले डॉक्टर सुंदरेशन, मैं डॉक्टर चौधरी से कहूँगा कि वो जब तक आप समझे मंच पर रह सकते हैं। अभी जो और भी कार्यक्रम है हमारे फ्लोरा सारथी जो मैगजीन है उसका रिलीज, उसमें भी कृपया अपने कर कमलों से उसका अनावरण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर ये एक बाई एनुअल मैगजीन है, फ्लोरा सारथी इसका नाम है। इसमें हम लोग पॉपुलर आर्टिकल भी इन्वाइटेड थ्रू आउट द कंट्री, because science should reach each and everyone. We should translate the science into the common public people. So that's the reason, that's the main aim of this Flora Sarthi. So this issue, we have got a overwhelming response. This issue started with our founder president note. The note is some very important aspect, how the future of microbiota
the tiny world, the microbes, tiny world of microbes, how they can help to keep our health very in a good health. And this is very important aspect actually. I request everyone should go through this note. It is a very good note actually. It is a very important aspect. And we have got this time more than 8 articles for this issue, but due to some page restriction, we have restricted with only 5 articles, and that's starting from farming for communities and nature. And another one is Indian seed vault, and the very important aspect of biochar. And we have got one important small note on research funding schemes for empowering women researchers in science and technology by Dr. Shilpi Fall. So we have a very good coverage this time actually. So I think Dr. A.K. Singh sir can brief further. डॉक्टर सुंदरेशन, जैसा आपने बताया कि ये 6 मंथली मैगजीन है जिसका प्रथम लॉन्च हमने 2019 यानी 2019 में किया था, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और उसके पश्चात अब तक जनवरी 2024 तक 10 इशूज इसके छप चुके हैं। ये जो जुलाई का इशू है और जो अभी शीघ्र ही आप सभी जितने महानुभाव उपस्थित हैं ये रिलीज किया जाएगा, इसका अनावरण किया जाएगा। ये 11वां इशू है और इसमें जैसा कि आपने बताया कि इसमें कुछ परमानेंट फीचर्स हैं जो कि फ्लोरा और फौना साइंस फाउंडेशन के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसका एक बहुत सुंदर कवर पृष्ठ है जिसमें फ्लोरा फौना से संबंधित चित्र होता है, एक सेंटर स्प्रेड जिसमें बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स का संकलन है और हमारे ही वैज्ञानिक डॉक्टर अनिर्बन पाल द्वारा, और 8 आर्टिकल्स हैं जो कि विभिन्न विषयों पर है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर और एलाइड एरियाज। उसके अलावा हम जो हमारे सहयोगी हैं, जो कोलैबोरेटर्स हैं, उनके वो क्या काम कर रहे हैं, उनके एडिटोरियल्स को भी हम स्थान देते हैं। और पूरे वर्ष यानी कि जो छमाही में जनवरी से लेकर के और जुलाई तक का जो समय है, 2 वर्ष मतलब वर्ष में 2 बार जो गतिविधियां रहती हैं फ्लोरा फौना साइंस फाउंडेशन की, उन गतिविधियों के बारे में भी जानकारी देते हैं जो पाठकों को, और आगे आने वाले जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताते हैं। मैं मैगजीन का पृष्ठ यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मुझे एक सेकंड में थोड़ा सा इसको रिड्यूस करके उसमें मैगजीन सेक्शन में जाता हूँ। और मैगजीन जो इसका मुख्य पृष्ठ है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, इसका कवर पेज आप देख रहे होंगे, फ्लोरा सारथी। ये विजिबल है सर? Yes, sir, it's visible. ओके, सो जैसा मैंने बताया कि इसमें बहुत सुंदर कवर पृष्ठ है, और दूसरा पन्ना अगर आप देखें तो इसमें बताया गया है कि ये पर्पल सनबर्ड का चित्र है इसके कवर पेज पर, जो कि एक ऐसे उस पे हमारे डॉक्टर अनिर्बन पाल द्वारा इसको दिया गया है। और ये हमारे कंटेंट पेज है जिसमें सारे जो आर्टिकल्स हैं या फाउंडर्स नोट, ये भी एक हमारा परमानेंट फीचर है जो विभिन्न विषयों पर हर अंक में इसका उल्लेख होता है। जो हमारे फाउंडर्स प्रेसिडेंट डॉक्टर खनुजा जी के द्वारा लिखित एक नोट होता है सामयिक समसामयिक विषयों पर जो हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर और एलाइड एरिया से संबंधित रहता है। तो ये कंटेंट है और शीघ्र ही ये मैगजीन आपके हाथों में होगी। इसका डिजिटल वर्जन आज हम रिलीज कर रहे हैं। मैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर खनुजा
और जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट पैनल पर हैं उनसे सभी से निवेदन करता हूं कि इसका अनावरण करें। शीघ्र ही इसकी प्रति जो PDF है आपके व्हाट्सएप पर या ईमेल के द्वारा आपको भेज दी जाएगी। इसके साथ ही मैं डॉक्टर चौधरी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आने वाले अंक के लिए काला नमक पर यदि आप एक आर्टिकल दें जो कि पॉपुलर आर्टिकल हो तो उसको और भी प्रचलित करने में मदद होगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, जरूर भेजेंगे। जी एड्रेस दे देंगे, रिट्रीव ले आते हैं तो जी email मैं पे दे ये देंगे। मैगजीन आपको भेजूंगा सर, जो सर्टिफिकेट साइटेशन के साथ ही इसकी मैगजीन भेजूंगा आपको, तो आप उसको आप अप्लाई। डॉक्टर AK सिंह आप फॉलो अप कर लीजिएगा उसके जी बाद। सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। इस ऑफर के लिए धन्यवाद आपको। थैंक यू डॉक्टर मनिका फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम। Yes, sir. As we move forward, thank you for this. As we move forward, I request Dr. Sunita Singh Dhawan to please announce for SKIA Awards. Thank you, Dr. Manika. Am I audible? Yes. Of course. Yes, yes. So may I share the screen? Yes, ma'am. You can share the screen. Yeah. Okay, thank you. तो गुड आफ्टरनून, सभी को नमस्कार एवं अभिवादन। आज का लेक्चर जो बहुत ही अच्छा लगा। चौधरी सर बहुत बहुत थैंक यू, एंड स्पेशली मैं अपने फाउंडर चेयरपर्सन एंड माय मेंटर डॉक्टर प्रोफेसर तनुजा को बहुत बहुत मैं आभारी हूँ सर आपकी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसकी अवार्ड के लिए इंट्रोड्यूस करूँ। और ये प्रोफेसर सुशील कुमार इनोवेशन अवार्ड स्टार्टेड बाय माय मेंटर प्रोफेसर Professor S. Tanuja for in the memory of legendary scientist and geneticist Professor Sushil Kumar. It was third in the series. So I wanted to introduce this award for the gathering. The prestigious award is instituted in the memory and respect of the legendary scientific leader, researcher, and teacher of uncountable scholars and students across generations. Professor Sushil Kumar, it was started with the help of Professor Sushil Kumar School PSKS, another part of FFSS started by Professor SPS Thanuja, who have been positively engaged in mentorship and working atmosphere created by him in his lifetime. The award is of unique recognition in agriculture, life science, and applied fields, including multidisciplinary areas, going beyond traditional classification of scientific research, leading to inventions and technologies, will be known as Professor Sushil Kumar Innovation Award SKIA. This is third in the series, and in this, the nature of award, a citation with plaque of honor and token amount of 11,000 will be presented to the recipient in the field of interdisciplinary subject field of sciences, technology, and innovations. Purpose of this award is for young and mid-career scientists and researchers below the age of 40 years towards recognition in agriculture, life sciences, and applied fields. Recognition is meant to bring to the forefront outstanding work and contribution to the nominated members for multidisciplinary area with direct impact on societal empowerment. The aim of the award is to create a platform of future leaders of innovative science with direct positive impact on science and society. So, eligibility,
any citizen of India engaged in science, technology, and innovation or working in India are also eligible. The work of innovation research submitted for recognition should have been performed in India only through collaboration or support for all will be inclusive. If the nominee is the lead and there is no with collaborators. The upper age limit is 40 years as on 14 December of the year of. The award shall be bestowed on a person who is the opinion of such committee constituted by the FFSF and its members has made conspicuously important and excellent contributions to innovation. The award will be given on the basis of contribution made to work done. The award shall be conferred every year based on the recommendations of the committee on 14 December, the birth anniversary of Professor Sushil Kumar, in a special function organized by Flora Fauna Science Foundation. The search committee will be constituted by the FFSF and in consultation with the PSKS school for selecting the person. Nominations will be nominations and application. Name of the application may be proposed by a member of Professor Sushil Kumar School, Flora Fauna Science Foundation, nationally recognized scientific societies and academies, vice chancellors of universities, institutions of national importance, directors of recognized organizations, and heads of non-for-profit organizations. Individuals who have made significant contributions in the multidisciplinary area with direct impact on empowerment on high-end scientific breakthrough as game changer, benefiting scientific community. Each nomination should be accompanied by a detailed statement of work and attainment of nominee and applicant and a critical assessment report. A candidate once nominated would be considered for a total period of 3 years, if otherwise eligible. Age on the first year of submission should be within the defined bar of 40 years. Nomination addressed to the founder. Nominations or applications should be addressed to the founder, Professor Sushil Kumar School, on the provided email, and should be sent digitally on PDF format as per the prescribed format. Summary and photograph of the proposed nominee are also required through email. The presentation of this award will be like SKR 2024 will be presented to the recipient as a citation and token amount of 11,000 and the travel support by economy year. The award shall be conferred everywhere based on the recommendations of the search committee on 14 December of every year and on the anniversary of Professor Sushil Kumar in a special function. In all matters of award, the decision of PSKS and Flora Fauna Science Foundation will be final and binding on the concern. So for further details, you can contact us the provided address. And so thanks and I'm really thankful and I now request founder chairperson Professor S.K.S. Khanuja for announcing for this SKR 2024 formally on this. Thank you. So I declare that this award now is open for the candidates who are eligible to apply for it. As has been told that this is for mid-career young scientists below the age of 40 years who have worked in India, even if the collaboration has been there outside, but the work should have been done in India. And the key is innovation, and the path is multidisciplinary or interdisciplinary. So I invite all those who are from faculty here to nominate their students or their known people who are doing excellent work in interdisciplinary and multidisciplinary areas. So we look forward to follow up of this on last date and performa, etc. from our website, and Dr. Sunita would also be sending emails to various institutions and heads, and also those who are eligible to nominate. So let's look forward to the continuity of this very important remembrance of a legendary mentor, Professor Sushil Kumar, who has been my mentor too, directly when I was his student. And also he was my boss at CMAP. So always I cherish to remember him, and we look forward that everyone gets benefited by what he
preached and taught for science. Thank you. Thank you Thank so you, much. sir. Thank you so much, ma'am. Thank you. With this, last but not least, I request Dr. Neeraj Jain, our General Secretary of the Foundation, to please share the progress report of this year. Dr. Neeraj Jain, please. Thank you, Dr. Manika. Okay, you're audible. Yes, I'm just sharing. Is my screen visible now? Yes. Is my Yes. screen visible? Visible. Yes, it is visible. visible. Yeah. Okay, I'm just, I Please. suppose it is in presentation mode now. Go to the first slide. Yeah. So first of all, good afternoon, everyone, and a very happy Foundation Day, which is the 9th Foundation Day of the Flora Fauna Science Foundation that we are celebrating today, and for which we have gathered here online. And as a General Secretary of the Foundation, I would like to present the progress highlights, which from the duration July 2023 to June 2024, that is since the last Foundation Day till date. So this, as we all know, we already had the presentation for today, the 9th Foundation Day. And I also thank our chief guest and lead speaker for joining us for this Foundation Day. And thank you very much, sir. So moving ahead, so this is the main theme of the Flora Fauna Science Foundation. So I'll just read, maybe there are some new viewers who would like to know about Foundation. So I'd just like to read through this slide. The Flora Fauna Science Foundation is a dream to be translated in the direction of enabling society to achieve health and nutrition through science. And the science force that we envisage is integrated knowledge that emerges from discoveries of agriculture, biology, chemistry, and engineering, leading to path of farm to farmer for societal health and life that is lived with smiles. And every foundation, as an organization, we have a mission. The mission that the foundation goes through the trails of villages lighted with science-driven discoveries and creativity of minds to innovate and create entrepreneurial villages, which we call as e-villages, which has been very nicely coined by our founder president, Professor SPS Khanuja sir, as technology translation platforms of science, knowledge, and innovation, SKI, by enabling agriculture, health, and nutrition as drivers of quality life, economy, and growth of society. And the vision of the foundation is translating high-tech science discoveries, biotech skills, out-of-box ideas into high-value agriculture as technology-driven platform, creating entrepreneurial villages enabled with skills, knowledge, and innovations for natural and agro products of nutrition and healthcare, and creating self-reliant agro-entrepreneurial zones, that is AEZs, is strengthening India as nature-friendly growth model, nation of health and prosperity for the plan. With this vision and mission, our activities have been going on, which I'll be telling about in the next few slides. So starting from where we left last time, that is the 8th Foundation Day celebration, which was on the 10th of July. It was based on the theme, Fasal Se Safal. The lead talk was given by Dr. S. Senthil Vinayagam. So these are some of the glimpses of the last Foundation Day that was held. And the lead speaker, as I was telling, was Dr. S. Senthil Vinayagam, of CEO, AIDEA, Principal Scientist of ICR and ARM, Hyderabad. And the lead talk on the topic was on agri-entrepreneurship opportunities, idea to start up route for rural empowerment. And the founder president of Flora Fauna Science Foundation, Professor SPS Khanuja sir, presided over the function. And as a general secretary, I was privileged to present the details of the major work done by the foundation during the last 1 year. And the 9th issue of the Flora Sarthi magazine was digitally released and briefed by our Vice President, Flora Fauna Science Foundation, Dr. Anil Kumar Singh sir. And the announcement for inviting nomination for ISKIA was also done, as was done just a few minutes ago. That was for the last year, that was done.
And we also kicked that, another important thing that we did on the last Foundation Day was the kickstart of Umang 2023 on communication in science by founder chairman and mission Umang mentors. Presentation of citation was done to the lead speaker, and the session, as always, was moderated by Dr. N. Manika beautifully. So as I was telling about the mentorship program that kickstarted the last year. So, sorry. Yeah. And so this was in communication in science, and it spanned over for 100 days. So there were learners in the form of students were there, and then they got to learn from various, there were a galaxy of scientists who are our members, who were taking classes for them, and also not just classes, not traditional classes. They were taking queries and kind of how they can excel in their field. So, and then there was the valedictory session of the Umang, in which the students and the mentors were felicitated. Yeah. So these are the galaxy of the entrepreneur mentors that we had for our session. And so there, and a very important thing is that the students not only learn, but they learn in action. So this was something that was contributed by the students after they had finished the program. So they came out with the webinar that was conducted completely by them. Now coming to a very important aspect of our foundation that has been started, if I'm not wrong, around 3 years back. That is, since we have a Flora Fauna Innovation Summit, so that we started with having a yearly web series in the form of that theme-based web series, which will be culminating in the Innovation Summit. So the last year series were Fasal Se Safal, and this summit was the pre-summit, as I told you, and there were recurring monthly, second Saturday of every month. There were lectures, and there were live broadcasts on FB page through Zoom platform. And these are the flyers which tell us what the extent of expertise that we had on the panel. From Dr. Brahma Singh, who is a Padma Shri awardee, to Dr. Ashutosh Pandey, and we have Professor Ravinder Rana, who is founder and director of Rana Naturals and Educational Consultants Private Limited. Then as this one was included as the Foundation Day lecture also. And we also have Dr. Ajit Kumar Shashni, who is director at CSIR NBRI, who was also on a panel, Dr. V. Sundaresan, who is principal scientist at CSIR CMAP. And we had Dr. D. Damodaran, director, ICRC ISH, and Dr. Manish Das, director, ICR DMAPR. So that was the plethora of the experts that we had for the whole year round, that the audience were, I'm so very sure, were privileged to listen to. So that, as I told you, that whole web series culminated into the 5th Flora Fauna Innovation Summit, that is FIPIS 2024. And this was conducted on February 10th, 2024. So this event was jointly organized by Flora Fauna Science Foundation in association with CSJMU Kanpur. And this was live streamed on FFSF Facebook page for everyone, but it was open for all. It included theme, innovation lectures, presentation of innovation on ideas by participants, interactive session with an expert panel covering various aspects relating to agriculture, farming, health, and nutrition, which is in our mandate. Dr. A.B. Narayana, former Director, Regulatory Affairs, Foods and HPC, Unilever Research Bangalore, was the chief guest and delivered the innovation lecture. The theme lecture was delivered by Professor Suman P.S. Khanuja, our founder president, and the presidential address was given by none other than Professor Vinay Kumar Pathak, who is the Vice Chancellor of CSJMU Kanpur. The dignitaries and the web series our lecturers, the lead speakers were awarded and also felicitated. It was attended by renowned scientists, innovators, progressive farmers, startups, entrepreneurs, students, researchers, and societal workers. Anyone who can contribute to science can be a part of our Innovation Summit. So these are the glimpses of the Innovation Summit. So these were some of the speakers, the panelists. We also signed an MOU with NBRI. Actually, it was signed before. We just really, made it official that day. So these are the glimpses.
Okay. Then another important activity for the last year was the anniversary lecture, Professor Chaudhary Kumar Bhatt anniversary lecture, which is a respectable tribute on his birth anniversary by his large numbers of students, colleagues, friends, and admirers. It was organized by Flora Fauna Science Foundation in association with CSIR, National Botanical Research Institute, Lucknow. It was organized on 14th December 2023 at Lotus Auditorium of CSIR NBRI, and Dr. Ajit Kumar Shashni, Director CSIR NBRI, was the lead speaker that day, and he spoke on metabolic engineering for climate resilient agriculture. We also had a very important development and important activity, which has now become a regular activity also, which is the conferring of Professor Sushil Kumar Innovation Award. The second Professor Sushil Kumar Innovation Award, ISKIA 2022, was conferred upon Dr. Pranjal Chandra, who is from the School of Biochemical Engineering, IIT BH in Varanasi. The award was given to him in recognition of his innovative research and outstanding contribution in the scientific area of development of deployable and highly sensitive nanohybrid sensing platform for ultra-fast detection of picloram in rice water and soil. Another important activity is the release of In Knowledge Calendar and Flora Sarthi January issue, which was released this year on 13 January 2024. And these are the another important development was the 2 issues of Flora Sarthi, which were being released in this year. One of them already released in January, as I told you, and the next one that was released just a few minutes ago, which was the 11th issue. And the knowledge calendar, as I told you about. So this was the knowledge calendar, and it is just not any knowledge calendar. It really contains a lot of knowledge in it, and it is customized and by our own members, and it is guided and mainly conceptualized by our founder president, Professor Suman P.S. Khanuja sir. And a very important part of any organization is, excuse me, and a very important part of any organization are their collaborating partners. We also have a large array of collaborating partners, starting from Skies India Lucknow to CSIR IITR, that is Indian Institute of Toxicology Research, RFRAC, Regional Food Research and Analysis Center, Organization for Social Innovation and Research, Bharat Rohan Innovation Private Limited, Emerald Line Institute of Management and Technology, Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, Suraj Herbals Private Limited, Nishant Aromas Private Limited and Sugandhim, Center for Aromatic Plants, that is SCAP. Then also we have National Institute of Plant Biotechnology, that is NIPB, New Delhi, Fragrance and Flavor Development Center, FFDC, Kannauj, Chhatrapati Shahuji Maharaj University, Kanpur, Ekal Gravatham Foundation, Delhi, Khwaja Muinuddin Chishti Language University, and as I told you, one of the latest addition to our collaboration is National Botanical Research Institute, Lucknow. And so as we concluded the last series, we also started with the new one, that is Web Series 24-25, that is the pre-summit web series for our Flora Fauna Innovation Summit 2025. And again, it will be a year-long series. And the theme for this series is Vigyan Se Muskan, that is Science to Smile, recurring monthly, second Saturday of every month. So these are the flyers for some of the series lectures that have already taken place. Now coming to a very important part of this presentation are the accolades and achievements of our members when they had represented Flora Fauna Science Foundation on various platforms. And I'll start with none other than Dr. S.P.S. Khanuja sir, who represented Flora Fauna Science Foundation at ICAR DMAPR, and he chaired the IRC of this institute at Anand in Gujarat on 12 to 13 July 2023. Then sir also chaired the validity session of EDP on maps at the MedHub incubator of the DMAPR on 13 July. And he was also the chief guest at IPR workshop at the same organization on 14 July 2023. And then I'll talk about our vice president, Dr. Anil Kumar Singh. He keeps on contributing lot of
in the sense of a lot of activities that he goes to the actual villages and interacts with the farmers. So in that capacity, he was invited by Director General DDU, State Institute of Rural Development, BKT. It was a one-day regional seminar by National Commission on Women on 27 July 2023. And it was attended by Dr. A.K. Singh and also Dr. R.P. Bansal sir. In panel discussion, Dr. R. Singh presented his views on agribusiness opportunities in rural sector and Flora Fauna Science Foundation role in promoting e-villages. He also presented a book on medicinal plants of Lucknow and latest issue of Flora Sarthi magazine to Ms. Meenakshi Negi, who is an IAS member secretary, National Commission for Women. And the event was a large gathering of 250 women farmers from self-help groups. Continuing with the more, our founder president, Professor SPS Khanuja sir, was invited as guest speaker in the online faculty development program on nurturing faculty expertise in agriculture research, technology, and entrepreneurial ventures. It was organized by Amity University on 19 January 2024. He also had an invitation by Prasar Bharati in relation to G20 related programs as lead speaker at BBAU, and the theme talk was DNA teaches oneness in diversity and equilibrium. We also had a very special award for one of our members, Mrs. Kiran Aneja. She is an educationist and environmentalist and a very active member of Flora Fauna Science Foundation. She received the Mahila Shakti Vandan 2024 award by Kaveri, which is a social welfare organization. And this award was given to her on March 13, 2024. Then Professor SPS Khanuja has been very recently recognized as adjunct professor for a period of 2 years with effect from March 22, 2024 in the discipline of plant physiology by the Academic Council of the Graduate School, IARI, New Delhi. Professor SPS Khanuja was also invited as a chief guest and addressed a seminar on IPR creativity and innovation for attaining SDGs on World Intellectual Property Day on 25th April 2024, organized by ICAR, National Bureau of Fish Genetic Resources at Lucknow. And it was very nicely covered by several dailies of Lucknow and around. So these are the coverings done by the newspaper of in various dailies. Professor SPS Khanuja was invited at Sri Ram Swarup Memorial University as a chief guest and delivered a keynote address on World Intellectual Property Day on 26th April 2024. As our Professor SPS Khanuja sir is a very, very grounded teacher, and everyone loves to listen to him. So he also gave a molecular biology lecture series, which was conducted by sir for students and faculty of IARI on cells, genes, and organisms, homogeneity in heterogeneity from 18 to 23 May 2024 at IARI, New Delhi. And the second session of molecular biology lecture series was conducted on the theme of reaching the genomes, genes, mutations, and functions on 22nd June 2024 at the IARI, New Delhi. Professor SPS Khanuja also conducted a live interaction with the students and faculty of IARI on entrepreneurship concepts and opportunities on 22nd May 2024. Dr. Anil Kumar Singh, our Vice President, was invited to participate in an interactive meet organized at Shripati Lawn, BKT by Pragya Peeth Trust on 30th June 2024. The topic of discussion was environment and human welfare. There were several dignitaries, and the notable ones were Professor K.N. Tiwari, who is former head Soil Science CSA University, Dr. A.P. Srivastava, former Director, Agriculture UP, and many more. Now, this is a very special one. Our members are now and again invited to Akashvani, and this was a series of Bundo Ki Na Toote Ladi, which is about the water conservation. So our founder president, Dr. Sumanpreet Singh Khanuja sir, Professor Rana Pratap Singh, and Dr. Manika were invited for this series as invited speakers. I'll also like to tell you about a program, Radio Scope, in which our two members, Professor Supan B.S. Khanuja sir and Dr. N. Manika were invited, and this was themed on millets and more on your platter on 23rd July 2023. So, and then I would like to share
the upcoming activities of Flora Fauna Science Foundation. We will be coming up with our 6th Flora Fauna Innovation Summit in February. Then Professor Sushil Kumar Innovation Award 2024, which was just now told about. Professor Sushil Kumar Oration Lecture, and also Mission Umang 2024, which we are eagerly waiting for to kickstart. So thank you everyone for your patient hearing, and this was all the different activities and the progress report of the Flora Fauna Science Foundation for the last year. Thank you so much, Neeraj ma'am. It was very well articulated and very well presented. We learned everything what Flora Fauna did. Thank you so much again. Thank you. Now I request Dr. A.K. Singh sir to please take the dais. थैंक यू डॉक्टर मनिका। सभी को नमस्कार और फाउंडेशन डे की बधाई। It's a privilege for me to extend a vote of thanks to all those who are present here and who have contributed in one way or the other to make this 9th Foundation Day celebration of Flora Fauna Science Foundation a great success. Before that, can I have a namaste to everyone, and also pay my respect to Professor Dr. Kanuja, my teacher and mentor. Sir, namaskar, sir. God bless you. Congratulations for the Foundation Day to everyone. Thank you, Dr. Sasni. You can continue, sir. That's only I wanted to say. Thank you. First and foremost, I wish to place on record our grateful thanks to our chief guest, Dr. रामचेत चौधरी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ इस मंच पर पधारे और बहुत ही आसान शब्दों में काला नमक जो हीरा है उसके बारे में बताया, विस्तार से बताया। हमारे किसान भी इससे लाभान्वित थे, हमारे वैज्ञानिक भी लाभान्वित थे, और एक नई उपलब्धि जो अपने देश की है, जो आज करीब 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जिसकी खेती हो रही है, उसके बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रामचेत चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर सुमनप्रीत सिंह खनुजा, जिनका कि मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है सभी सदस्यों को, और उम्मीद है कि आगे भी इसी प्रकार से अनेकों प्रोग्राम कर हम इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। General Secretary Dr. Neeraj Jain, who is also a professor at Maharshi University. She has great responsibility there, but she has spared her valuable time to make very exhaustive progress of this foundation for the last 1 year, and very beautifully compiled all things. अगर कोई चीज छूट गई हो तो क्षमा कीजिएगा। थोड़ा बहुत फाउंडेशन डे की गतिविधियों के संबंध में फ्लोरा सारथी में भी संकलित करने का प्रयास किया गया है, और आगे आने वाले अंकों में आप लोग अगर इसको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, तो उसमें भी प्रकाशित किया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर नीरज। Our executive editor of Flora Sarthi, Dr. Sundaresan, deserves great appreciation this time because he has arranged about 8 articles, and 4 articles are reserved for next year, for next issue. And I hope that more articles will be contributed by all of you in different topics, both in Hindi and English. And also we would request for your suggestions for further improvement of the magazine. So thank you all the team of editorial committee who deserves appreciation for timely editing of the articles and giving their inputs on time, because this has enabled us to get it printed in time. Thank you all, Dr. Sundaresan and his team. Dr. Sunita Singh Dhawan, she has, as a convener of ISKIA, very important award established by Flora Fauna Science Foundation, and she has briefed about the guidelines and all the procedures and how to apply for Professor Sushil Kumar Innovation Award for this year. So I think this will be put on our website soon, and we expect large number of the applications for this year's award.
Dr. N. Manika, who has always been active and other scientific coordinator of the foundation, and she has beautifully organized, provided the Zoom platform to all of us, and she has also introduced the speaker. Thank you, Dr. Manika. And lastly, but not the least, all the guests, Dr. NBRI and Dr. Sasani, our friend, and all the distinguished guests. And I could see that number of people from media also, they have joined us. Ms. Meenu Khare from Akashvani. And I had also invited many of our friends from the press. So I think they must have noted down some of the major messages of this foundation. And I would also like to convey some of them. Thank you all once again who have also joined through our foundation's Facebook page and also at Zoom meeting platform. Thank you all once again, and congratulations to all of you for the 9th Foundation Day of Flora Fauna Science Foundation. And we shall meet again on 10th of August with some new topic. Thank you. So a big thank you. Yes, yes, Dr. Manika. A big thank you to Dr. A.K. Singh, sir. Yes, from- sir. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Ajit, for coming and being a support for the foundation always. And a big thanks to Dr. A.K. Singh, who actually is the man behind everything that is going on in the foundation all the time and with total precision and dedication. Thank you, Dr. Singh, on behalf of the foundation and me personally. Again, sir, a Sushil Kumar prize can be held at, it can be done in an NBRI. Oh, that's great. So we welcome that invitation and accept immediately. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, so sir. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir.